So now let's get started with our remaining part of this chapter, lenses. So as in the previous video, we have seen about the defects which are observed in the eye as per the change of the focal length and all of the lenses. Now, in the next part, we are going to study about the apparent size of an object. So, apparent size of an object is given here with one example that we are going to see. So consider the two objects PQ, P1, Q1 having the same size but different at the different distances but kept at the different distances from an eye as shown in the figure 7.15. As the angle alpha subtended by the PQ at the eye is larger than the angle beta subtended by the P1, Q1, PQ appears bigger than the P1, Q1. Thus, the apparent size of an object depends on the angle subtended by the object at the eye. मीन्स व्हाट इट इज टोल्ड हियर कि हमें मतलब PQ और P1 Q1 ऐसे दो ऑब्जेक्ट लेने हैं एंड वी हैव टू सी दैट एज द एंगल अल्फा विच इज सबटेंडेड बाय द PQ मतलब PQ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ है दैट एंगल इज नेम्ड एज द अल्फा एंड द P1 Q1 ऑब्जेक्ट अपीयर्स मतलब उसको देखने के लिए जो एंगल सबटेंड यहाँ पर किया गया है दैट इज द एंगल बीटा सो PQ appears bigger than the P1 Q1 thus the attended by the object at the eye मतलब यहाँ पर कहा गया है कि एंगल मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है ऑब्जेक्ट कितना बड़ा कितना बिग दिखाई देगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी आई से जो एंगल सबटेंड हुआ है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इट डिपेंड्स ऑन दैट एंगल सो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट depends on the angle subtended by the object at the eye. So use your brain power. We have given here two questions. So why do we have to bring a small object near the eye in order to see it clearly? If we bring an object closer than 25 centimeter from the eyes, why can we not see it clearly even though it subtends a bigger angle at the eye? और ऐसा क्यों होता है कि हमने हमें अगर एक ऑब्जेक्ट को देखना है क्लियरली सो वी हैव टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द आईज मतलब नियर टू आई और अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर क्या है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन अगर इससे भी हम क्लोज लेके आते हैं सो वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज as the angle subtended will be too much large और जो image formed होगी वो भी in the retina चली जाएगी so due to which we are not able to see the clear object there. Next we are going to see about the use of the concave lens. अब ये concave लिया लेकिन इसका use कहाँ पर होगा where the actual concave lenses are used in the real life. So first one is the medical equipments, scanner, CD player. These instruments uses the laser working of these equipments. Concave lenses are used. मतलब जो प्रॉपर वर्किंग के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं स्कैनर होता है सीडी प्लेयर सो ऑल दिस सच इक्विपमेंट्स द कॉन्केव लेंसेस आर यूज्ड नेक्स्ट इज द पीप होल इन द डोर और ये जो था एक हमें डू यू थिंक करके एक क्वेश्चन था सो देयर इट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड that which type of the lens is used in the peephole in the door. So the answer to that question is the concave lens. So the peephole in the door. This is a small safety device which helps us to see a large area outside the door. This uses one or more concave lenses. Then spectacles, concave lenses are used in spectacles to correct the nearsightedness that we have already seen. That is the nearsightedness, that is myopia. Nearsightedness is myopia and farsightedness is hypermetropia, the defects which we have already seen above. Next is the torch. Concave lens is used to spread widely the light produced by a small bulb inside a torch. और टॉर्च में जो कॉन्केव लेंस यूज किए जाते हैं बिकॉज वी हैव टू स्प्रेड द लाइट टू अ लार्ज एरिया मतलब एक स्मॉल बल्ब से हमें एक ह्यूज लार्ज वाइड एरिया तक हमें लाइट का जो मतलब स्प्रेड करना होता है दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कॉन्केव लेंसेज इन द टॉर्च. Next, fifth use is the camera, telescope, and microscope. This instrument mainly uses the convex lens to get a good quality images. A concave lens is used in front of the eyepiece or inside it. और जो camera, telescope, microscope होते हैं, all these instruments are using the convex lens. But फिर भी हम concave lens use करते हैं to get a good quality of the image. एक अच्छी quality की image generate करने के लिए, image obtain करने के लिए, we are using there the concave lenses.
So next is the use of the convex lenses. So again, the uses of the concave lenses and the convex lenses are also important from the board exam perspective also, and with the school exam also. So they may ask for the 2 marks this question, that user write down the uses of the concave lenses or write down the uses of the convex lenses. So we have for the 2 marks at least four uses should be written. So use of the convex lens, simple microscope. So now we are going to see about the convex lenses uses. So simple microscope में convex lens use कैसे होता है, that we are going to see. A convex lens with small focal length produces a virtual, erect and bigger image of an object as shown in the figure. Such a lens is called as a simple microscope or magnifying lens. One can get a 20 times larger image of an object using such a microscopes. These are used for the watch repair, testing precious gems and finding their defects. और जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस हम यूज करते हैं, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से हमें एक वर्चुअल इरेक्ट और एक बिगर साइज की इमेज मिलती है एज कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट. सो सच टाइप ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस और द मैग्नीफाइंग लेंस. और इसमें जो इमेज ऑब्टेन होती है, दैट इज द 20 टाइम्स लार्जर देन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट such obtained in such type of the simple microscopes. So इसी की वजह से कि हमें जो इमेज ऑब्टेन होती है वो 20 टाइम्स लार्ज होती है एज कम्पेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट साइज. सो इसी की वजह से ये जो लेंस होती है, ये वॉच रिपेयर करने के लिए जो आई के ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है फॉर रिपेयरिंग ऑफ द वॉचेस, बेसिकली यूज्ड इन देयर. देन टेस्टिंग प्रीशियस जेम्स, और जो प्रीशियस जेम्स होते हैं उनकी टेस्टिंग में भी ये कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है. और कुछ डिफेक्ट्स अगर किसी पार्ट में फाइंड करने होंगे, सो दिस टाइप ऑफ द लेंसेज आर अगेन यूज्ड देयर. नेक्स्ट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेंस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेंस वी आर एबल टू सी दिस. ये पी क्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और P1 Q1 P डैश Q डैश यहाँ पर इमेज ऑब्टेंड हुई है. सो एज वी कैन सी हियर क्लियरली दैट द इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बड़ी है. So due to which we are able to get a large, that is the 20 times larger image of the actual object. So object is at the focus. When the object is placed at the focus, we are able to obtain the image. These two diagrams are also important. अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और उसमें स्पेसिफाई अगर राइट डाउन द यूज ऑफ हाउ द convex lens is used in the simple microscope. So we have to write down this description along with these two diagrams to get the good marks. सो एज दिस टू इमेजेस आर द नेसेसरी, सो इसकी वजह से और ज्यादा क्लियर होगा मतलब चेकर को कि हाउ द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप. Next is the compound microscope. So simple microscope is used to observe small sized objects, but minute objects like the blood cell of the plants and animals, and minute living beings like bacteria cannot be magnified sufficiently by simple microscope. और simple microscope के use से हम मतलब small size के objects को अगर हमें देखना होगा, so that for that it is useful. But minute objects जैसे कि blood cells ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइन्यूट लिविंग बींग्स लाइक द बैक्टीरिया, जैसा कि हम देखते हैं कि इनकी साइज जो होती है वो नैनोमीटर माइक्रोमीटर में होती है. सो दैट सच स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वी आर नॉट एबल टू क्लियरली सी दैट इमेज फॉर्म with the help of the simple microscope. For that, we have to shift towards the some another kind of the instrument, that is the compound microscope. So compound microscopes are used to study these objects. A compound microscope is made up of the two convex lenses, objective and the eyepiece. The objective has the smaller cross section and smaller focal length. The eyepiece has the bigger cross section. Its focal length is also larger than that of the objective. Higher magnification can be obtained by the combined effect of the two lenses. मतलब यहाँ पर जो बेसिकली जो मेजर पार्ट जो फोकस किया है यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कि वी हैव टू ऑब्टेन द हायर मैग्निफिकेशन. अगर इमेज हमें जो ऑब्टेन करनी है क्लियर, सो वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1. सो एज पर दैट फॉर्मूला, इफ वी हैव टू ऑब्टेन, एज मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H2, that is the image height of the image. So for obtaining the clear magnification or the clear height of the image, double lenses use कर रहे हैं हम यहाँ पर. So
eyepiece. So due to which we are able to get a clear and the good quality image. So for that, the eyepiece has the bigger cross section, its focal length is also larger than that of the objective, and higher magnification can be obtained by the combined effect of these two lenses. Then as shown in the figure 7.17, the magnification occurs in two stages. Image formed by the first lens acts as the object for the second lens. The axes of both the lenses are along the same line. The lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between them can be changed. Means that in the compound microscope as we are using the objective and the eyepiece this type of two lenses. So एक जो लेंस है वो उसके इसमें से रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद the image which is formed by the first lens that is the objective lens, तो वो image act करेगी as a object for the second lens that is the eyepiece. दिस इज द मोर मतलब यहाँ पर इसका एक फंडा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेस यूज कर रहे हैं. सो एक लेंस से जो रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद जो इमेज फॉर्म्ड होगी, सो वो जो इमेज है वो अगले जो लेंस है उसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगी. सो एज वी कैन सी हियर द ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज फॉर्म्ड हुई, सो दैट इमेज इज एक्टिंग एज द रोल प्लेइंग अ रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट for the eyepiece, and we are able to get the huge size of the image. So this is the principle which is basically working behind the use of the compound microscope. और ये जो lenses है that are fitted in a metallic tube in such a way that the distance between them can be adjusted. मतलब objective and eyepiece के बीच का जो distance है that we can adjust as per our need, so we can able to get a clear and the good quality image. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द टेलीस्कोप. मतलब टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज की जाती है. सो हाउ इट इज यूज दैट वी आर गोइंग टू सी. सो टेलीस्कोप इज यूज टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन देयर मैग्निफाइड फॉर्म. The telescopes used to observe the astronomical sources like the stars and the planets are called as the astronomical telescopes. Telescopes are of the two types. First one is the refracting telescope, second one is the reflecting telescope. Refracting telescope uses the lens and reflecting telescope uses the mirrors and also the lenses. सो टेलीस्कोप में जो है कि हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स है, सो विच आर एट द इनफाइनिटी डिस्टेंस फ्रॉम अस, सो वी आर एबल गोइंग टू वी आर यूजिंग द टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो इसमें क्या है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विच वी आर नॉट एबल टू सी विथ अवर क्लियर नेकेड आई. So that type of the objects, stars and the planets, we are using the instrument. That instrument is the telescope. एंड टेलीस्कोप यहाँ पर दो टाइप के, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में यूज होते हैं लेंसेस एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर्स एंड आल्सो द लेंसेस आर यूज्ड. Next, in both of these, the image formed by the objective act as a object for the eyepiece, which forms the final image. Objective lens has the larger diameter and larger focal length, because of which maximum amount of the light can be collected. और इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने हमने देखा था कि जो यहाँ पर है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्जर डायमीटर है और लार्जर फोकल लेंथ है आई एज कम्पेयर्ड विद द आई पीस. यहाँ पर आई पीस का जो फोकल लेंथ और डायमीटर जो था वो ज्यादा था एज कम्पेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव. लेकिन यहाँ पर उल्टा है, दैट इज द अपोजिट. सो यहाँ पर जो होगा टेलीस्कोप में, सो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्ज डायमीटर होगा और लार्ज फोकल लेंथ होगी. क्यों, इसके लिए रीजन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लाइट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है वो मैक्सिमम अमाउंट में कलेक्ट की जा सके टू ऑब्टेन द क्लियर इमेज. So next is that on the other hand, the size of the eyepiece is smaller and its focal length is also less. Both the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between them can be changed. The principal axes of both the lenses are along the same straight line. Generally using the same objective but different eyepieces, different magnification can be obtained. So again, we in the metallic tube it is used fitted, so we can able to adjust the lens distance between the objective lens and the eyepiece to obtain the clear image. नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें भी हम कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज करते हैं. कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन वेरियस other optical instruments like the camera, projector, spectrograph, etc. In all this type of the objects or instruments, we are using the optical
instrument, that is the convex lenses are used. Next is the spectacles. Convex lenses are used in the spectacles for correcting the far-sightedness. एक तो यूज हमने इसका स्टडी किया ही है. Convex lenses are used in the spectacles for correcting far-sightedness. Concave lenses are used in the spectacles for correcting the near-sightedness, myopia. सो कुछ हो या ना हो, लेकिन ये जो डिफरेंस है दैट यू कैन एबल टू रिमेम्बर, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिफेक्ट्स जो है उनको डिटेल में स्टडी भी किया है एज विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स. Next also, if the in exam the question may asked about explaining of the telescope and all, so you have to draw this diagram of the refracting telescope and all, how the objective lens is there, मतलब objective lens बड़ी होगी इसमें as compared with the eyepiece in the telescope, लेकिन compound microscope में objective lens है वो छोटी होगी उसका diameter and all, and eyepiece diameter will be greater as compared with the objective lens in the compound microscope. Next is the persistence of the vision. We see an object because the eye lens creates its image on the retina. The image is on the retina as long as the object is in front of us. The image disappears as soon as the object is taken away. However, there is not instantaneous and the image remains imprinted on our retina for 1 upon 16th of a second after the object is removed. The sensation on the retina persists for a while. This is called as the persistence of the vision. What examples in our day-to-day life can you think about this? So, as we can see here, persistence of the vision क्या है? Persistence of the vision is that the we can obtain a clear image on the retina by of the object. So the image in the retina, मतलब जो वो retina के ऊपर कितने time तक रहेगी? That means how much it will persist the image of the object on the our retina. So वो time कितना है? That is the 1 upon 16th of the second after the object is removed. मतलब हमारी आंखों के सामने एक ऑब्जेक्ट है एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, सो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे जो आंखों की रेटिना है उस पर रहती है, दैट इज द 1 अपॉन 16th ऑफ अ सेकेंड. सो द सेंसेशन ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अ while. दिस इज ओनली कॉल्ड एज द persistence of the vision. सो persistence of the vision के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो सो इट इज सिंपल टू एक्सप्लेन दैट कि द इमेज which is the image of the object appears on our retina, it stays for 1 upon 16th of the second as the object is removed in front of the from the front of the eye, and after that the object image of that object disappears. और अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए और तुरंत उसे निकाल दिया जाए, सो इट विल बी क्रिएटिंग अ, मतलब हमें वो इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की दैट विल नॉट परसिस्ट ऑन द रेटिना. सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट, मतलब रिमेम्बर नहीं होता वो ऑब्जेक्ट कौन सा था. सो that means it is taking about 1 upon 16th of the second after the object to imprint on our retina. The retina in our eyes is made up of the many light sensitive cells. These cells are shaped like a rod and like a cone. So जो light sensitive cells होते हैं retina में, that they are shaped as like a rod or the cone. The rod like cells respond to the intensity of the light and give information about the brightness or dimness of the object to the brain. Conical cells respond to the color and give information about the color of the object to the brain. और जो रॉड शेप्ड लाइक सेल्स होते हैं दैट आर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, दैट how much is the brightness or the dimness of the object to the brain. The conical cells responds to the color and give information about the color of the object to the brain. Brain processes all the information received and we see the actual image of the object. So brain processes all this type of the color and the intensity of the light and then give the information about that particular object to the brain. So rod-like cells respond to the faint light also, but conical cells do not.
Thus, we perceive colors only in the bright light. The conical cells can respond differently to the red, green, and blue colors. So, as we can observe this, suppose एक शॉप है और उसके जो नेम प्लेट है उसमें अगर रेड कलर यूज किया होगा, ग्रीन कलर यूज किया होगा, ब्लू कलर यूज किया होगा, so we are able to see that our eye cells are responding differently as per the color. So the cells which are reacting for that, responding for that, the color, that are the conical cells. So when red color falls on the eye, the cells responding to the red light get excited more than those responding to the other colors, and we get the sensation of the red color. Some people lack conical cells responding to the certain colors. These persons cannot recognize their colors or cannot distinguish between the different colors. These persons are said to be the color blind. And the people who are the color blind, they are actually, they are not able to distinguish between the colors. They are not able to categorize or respond, मतलब उनके जो eye cells होते हैं, that they are not responsive to the different colors, so due to which they are called as the color blind. Apart from not being able to distinguish between the different colors, their eyesight is also the normal, और उनकी जो eyesight the normal but are not able to distinguish between the colors. So this is all about this chapter number 7, that is the lenses which we have studied. So quickly we will be seeing that what are the topics which we have covered or seen in this chapter particular lenses. So in the lenses we have seen about what is the lens. Then we have seen about the different types of the concave and the concave convex lenses, biconvex, plano-convex, positive meniscus, biconcave, plano-concave, negative meniscus, and all. Then we have seen that how is the center of the curvature, that are all the parts related with the lens, that is center of curvature, radius of curvature, principal axis, optical center, principal focus, focal length. Then we have seen about the ray diagram for the refraction, images obtained, how the what are the three rules which are used for getting the ray diagram, obtaining the ray diagram. Then we have seen about this experiment. Then we have seen that how the real image is obtained from the convex lens. So we have also seen about the ray diagrams for by placing the object at the various different positions at infinity beyond 2f1, 2f1, f1 and f2, f2 and all. We have also seen about the nature of the image obtained and also the size of the image obtained. Then we have seen about the uses image obtained by the concave lenses and all, above convex lenses which we have used. Then